So, welcome everyone to Web3 in Business. This is a podcast where we meet with Web3 people who have done uh, great in their industry and try to learn from their experiences, try to know what's happening in the Web3 world. And today we have with us Mark Kalra, who is now studying in IIT Bombay and working on pretty exciting stuff. It's best we hear from her. So hi, Mark. Uh, uh, Thanks a lot Hello. for coming to this show. And why don't you introduce yourself a bit? Tell us something about yourself. Sure. So basically, currently I'm in third year undergraduate at IIT Bombay, and I'm working on my startup named as SwapSo. So in this whole journey, we'll tell you what is SwapSo and how the journey began and what the SwapSo means and everything. So you'll come to know in this podcast. I wish it will be Mhm. exciting for all of you and hope it will add some value in your journey as well. How did IIT happen? And how did IIT lead to something as wild as Web3? So basically, my journey was quite off coming to IIT. Like in 11th, 12th, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी हुई है स्पेसिफिकली. I was having my schooling stuff. तो मतलब Okay. मुझे ऐसा कि मुझे schooling करनी है, and then I will take a drop for 1 year, and then I will go to IIT. मतलब वो क्लियर था IIT जाना है, लेकिन ऐसा था कि नहीं schooling भी करनी है. But then COVID आ गया तो मेरी schooling भी online हो गई. So I was feeling bored actually Okay. in my 11th Okay. class. So I took an online coaching from an academy. कि मैं साइड बाय साइड थोड़ा सा आईआईटी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ. देन माय इंटरेस्ट बिगिन एंड आई स्टार्टेड लर्निंग इट. तो ऐसा हो गया फिर 12th तक आते आते कि नहीं, अभी इतना प्रिपरेशन है कि कर ही लेते हैं, क्या सीट आईआईटी अभी सही ही रहता कर लेते हैं. है। अरे तो हाँ, सेल्फ सेल्फ बट हाँ प्रिपरेशन शुरू पे से वो था कहीं आईआईटी, ना कहीं. सेल्फ प्रिपरेशन से मतलब बट आईआईटी शुरू से क्रैक था कर कि रहा आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा तो नहीं अरे जाना है. वो बहुत क्लियर था कि हाँ 12th में एग्जाम दिया तो एग्जाम वेंट वेल, बट कॉन्फिडेंस नहीं था उतना कि कैसा जाएगा. बट द स्टेटमेंट वाज क्लियर कि अगर आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला तो आई एम टेकिंग अ ड्रॉप नाउ. अरे and you cracked that, one of the most premium IITs, and that too from self preparation. So that's hats off to that. And then how was IIT Bombay? मतलब your dreams, मतलब जैसा सोचा था वैसा ही था? मतलब एज पर माई एक्सपेक्टेशंस अच्छा है. मतलब अच्छा इन द सेंस एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत अच्छा पाथ है. आई वुड से लाइक हम्म, इन दिस पॉडकास्ट द मेजर फोकस ऑन वेब3 एंड एंटरप्रेन्योरशिप. आई वुड लाइक टू ऐड कि why IITs had a better input and why IIT बॉम्बे से इतने यूनिकॉर्न्स बने. तो मुझे वो अंदर जाके रियलाइज हुआ क्योंकि जब आप आईआईटीज में होते हो ना तो बहुत सारे बीटेक क्राउड से आप आगे हो चुके होते हो. तो इट गिव्स योर कॉन्फिडेंस कि आप कुछ अच्छा हम्म, लीड कर सकते हो. यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कुछ कर जाओगे. एंड सेकेंड थिंग इज वो डर नहीं रहता है अंदर से कि अब प्लेसमेंट नहीं लगेगा. वो डर खत्म हो जाता है, ऐसा लगता हम्म, है कर लेंगे. तो फिर देन यू जब होता है कि आप सिक्योर फील करते हो तो देन यू कैन टेक बेटर रिस्क. तो एक रिस्क फैक्टर exactly. आप लेने के लिए रेडी हो जाते हो. तो देन यू कैन चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ पार्ट. बिकॉज मोस्टली मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो स्टूडेंट्स का मोस्टली होता है कि हम करना तो चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बट ऐसा लगता है कि कमा नहीं पाएंगे उतना या सिक्योर नहीं हम्म, फील होता. तो हम्म. आईआईटी बॉम्बे गिव्स यू एन एडवांटेज कि कभी भी जॉब तो लगी जाएगी. तो वो तो एक सेकेंडरी है ही. ना प्राइमरी थिंग अपनी चीजों पर फोकस कर सकते हैं. तो और इसलिए वो नेटवर्क एक काफी एडवांटेज हो जाता है. और एक नेटवर्क इफेक्ट भी मिलता है बिकॉज यू हैव अ ग्रेट एलुमनी हम्म network. You have great student network as well. There are many clubs and with very happening clubs, so you meet diverse set हम्म. of people with diverse set of experiences, interests. That also एग्जैक्टली, helps पीयर you ग्रुप तो grow. बहुत अच्छा मिलता ही है. बट Mhm. एलम्स का भी बहुत सपोर्ट मिलता है. लाइक इन वेबसी ऑल्सो देयर आर मेनी एलम्स जो मैं जिनसे मैं रेगुलरली भी मीटअप करती रहती हूँ. सो दे कीप्स एडिंग यू वैल्यू. और वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा टाइम जा रहा है, वो वाला तो कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं. लाइक दे ऑलवेज Mhm. थिंक कि बेटर ग्रो करे, जो हमारे जूनियर्स है वो आगे ही बढ़े. तो एक वो बहुत अच्छा कल्चर बिल्ड हुआ है. Do non-IITian students or people collaborate with your startups? मतलब मतलब if someone who is not from IIT, can he take advantage of the incubator experiences and all those clubs you have? श्योर श्योर. हाँ, Hmm. मतलब ऐसा क्लब्स में डायरेक्टली दे कैन नॉट बी मेंबर बिकॉज वो तो Hmm. क्लब्स ऑफलाइन ही रन हो रहे हैं स्टूडेंट से. बट लाइक all most of the times the participation is open for all. Everyone can Hmm. attend the events. Hmm. And coming to the incubation part, like we have signed in IIT Bombay. So most of startups who are incubated are also from non-IITians and coming from Hmm. non-IIT background as well. So
उनको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज तो ओपन ही है, ऐसा तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुझे लगता है, हम्म एंड है भी हम्म नहीं है। बाकी इवन इन माय own team as well, like we are हम्म 5 core members in our team, so we two are IITians, me and my co-founder, rest 3 are non-IITians as well. Okay, okay. So what are some social media handles or websites someone should be updated with, to understand or to keep track of opportunities that are happening in this space, tech space, any IIT, any engineering colleges, you know. Like वैसे तो क्लब्स वगैरह तो लिंक्डइन पे भी काफी एक्टिव होते ही हैं, बट Hmm. कमिंग टू द वेब थ्री पार्ट, मोस्टली ट्विटर ज्यादा एक्टिव है इन वेब थ्री स्पेस। Hmm. डिस्कॉर्ड चैनल भी काफी एक्टिव है वेब थ्री में, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जॉब्स चाहिए या कुछ भी कम्युनिटी रिलेटेड कुछ भी आपको इंटरेस्ट लेना है उसमें एक्टिव रहना, देन डिस्कॉर्ड Hmm. ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। टेलीग्राम कम्युनिटीज भी काफी एक्टिव हो रही है आजकल वेब थ्री की। बट एज अ ओवरऑल आपको प्रोफाइलिंग मेंटेन करनी है एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव या एज अ प्रोफेशनल परस्पेक्टिव, तो लिंक्डइन प्रोवाइड्स अ बेटर ऑप्शन टू यू, क्योंकि आप वेब थ्री के भी तो भी आप वहां पे डाल ही सकते हो, बट वेब टू Hmm. के भी काफी लोगों का कनेक्ट मिल जाता है आपको वहां पे। Exactly, exactly. Any specific groups in Discord or in Twitter, any specific Twitter accounts you would like everyone to follow or be in touch with? मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक जैसे रोहस नागपाल करके हैं, दे आल्सो हैड अ वेरी गुड कंटेंट आई वुड से। एंड एक वेबसी लाइट फॉरम करके भी कम्युनिटी है, उसमें काफी सारे वेबसी के ओजीज है, तो तुम्हें ऐसा कनेक्शन चाहिए हो तो उस ग्रुप के Hmm. थ्रू कनेक्शंस मिल जाते हैं इजीली। बाकी संदीप नाइवाल है, उनको भी फॉलो कर सकते हो ट्विटर वगैरह पे, तो दे आल्सो हैड अ वेरी गुड कंटेंट एंड काफी वैल्यूज मिलती आती है। देन वन ऑफ द माय फेवरेट वन इज सुमित गुप्ता, फाउंडर ऑफ कॉइन Yes, डीसीएक्स, Coin D6. आईआईटी Yeah, बॉम्बे yeah. आनंद। हाँ, Okay, तो okay. उनकी नॉलेज मैं उनसे भी रिसेंटली मिली थी, तो हाँ. लाइक इन आईआईटी बॉम्बे ही केम ड्यूरिंग ई समिट, ही केम एज एन इन्वेस्टर इन टीटीएमएम पिच, तो आई मेट हिम देयर। तो बहुत ही हम्बल नेचर मुझे फील हुआ उनका, आई रियली लाइक टू ऐड इट। एंड Okay. जो नॉलेज वाइज एक होता है ना, एक बहुत ही वाइज फील देना, वो उनमें था। बहुत ही वेब3 को बहुत ही डीप टेक में समझना, उसको उसकी मार्केट को समझना, उसकी वैल्यूज को ऐड करना, वो उनमें मुझे एक काफी अच्छी चीज दिखी। क्योंकि बहुत सारे crypto exchanges have come and go, but Coin D6 there are very few which has Indian exchanges that are, हम्म, keeping in हाँ mind हाँ all the हाँ। regulations that have come in. They have done pretty good हम्म। job so far. So इवन how did बाकी चैनल्स वगैरह तो, इवन स्वाप्सो के भी ओन चैनल्स है, तो यू कैन फॉलो इट एज वेल, जहाँ पे Hmm. भी आपको काफी सारे मतलब हम लोग डालते रहते हैं, पोस्ट वगैरह भी रेगुलर डालते रहते हैं, ताकि जनरल वेब से पोस्ट रहते हैं ताकि लोग को नॉलेज रहे, थोड़ा अप टू डेट रह पाए। यू कैन चेक Hmm. इट आउट एज वेल। Yeah, you have a pretty good community within SwapSo as well. So I was going to ask you, like, how did this thing, got the idea? How did it start? How did you get into it? मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ इस चीज का? तो मेजरली मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी कि व्हेन आई केम इन माय कॉलेज, तो ड्यूरिंग लाइक जब मैं आईआईटी बॉम्बे आई आई फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आफ्टर 1 or 2 days आई वाज इन्वॉल्व इन टेक फेस्ट, which is Asia's largest science and technology festival of IIT Bombay. So I joined it as a volunteer. Like फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वॉलंटियर होते हैं, दे कैन जॉइन इट। तो आई जॉइन टेक फेस्ट, लाइक मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था शुरू से ही टेक फेस्ट में, तो मैं उसमें ज्वाइन करी। देन आई मेट माई को फाउंडर देयर, लाइक ही इज नाउ माई को फाउंडर। अर्लियर वो मेरे सीनियर थे, ही इज 1 year सीनियर टू मी, तो ही वॉज इन सेकेंड ईयर एट दैट टाइम। तो ही ज्वाइन वन इवेंट जो टेरा ने ऑर्गेनाइज कराया था आईआईटी बॉम्बे में, वहां से उनको थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का नॉलेज हुआ था। तो उन्होंने टेकफेस्ट में भी प्रपोजल रखा कि हम लोग कुछ ब्लॉकचेन के अराउंड पे कुछ इवेंट रखते हैं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू टेक्निकल एंड वी शुड हैव इट, बिकॉज 2022 में टेकफेस्ट भी आफ्टर 2 years हो रहा था कोविड के बाद, तो हमें था कि उसको और ग्रैंड लेवल पे करना है, तो एक इंटरनेशनल टाइप इवेंट प्लान करते हैं। So then we planned international blockchain summit at that time. So me and Karan was lead at that time. तो हम लोगों ने तब इंटरनेशनल ब्लॉकचेन समिट ऑर्गेनाइज कराई, तो प्रपोजल भी पास हुआ एंड हमने कराई। तो 16 to 17 नेशनल स्पीकर्स को हमने वहां पे बुलाया था वेब3 के मेटावर्स के। सो उस जर्नी में भी काफी कुछ पता चला, जब हम लोग स्पीकर्स को रीच कर रहे थे, उनके प्रोफाइल्स वगैरह चेक कर रहे थे, तब भी काफी कुछ पता चला उनके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगी मैं भी। और उसके बाद जब वो इवेंट हुआ, ऑन द फाइनल डे ऑफ द इवेंट, जब मैं उन इंटरनेशनल स्पीकर से मिली एंड जब हमने देखा कि लाइक मोस्टली ऑफ देम वर फाउंडर्स ओनली, तो उनकी खुद की भी Hmm. कंपनीज थी, किसी मेटावर्स में है, किसी की ब्लॉकचेन स्पेस में ही है। तो उनसे मिलके एक रियलाइज हुआ कि स्पेस में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ब्लॉकचेन स्पेस में,
and how India is lacking in it. So like mostly of them were international speakers. So they supported us as well कि तुम लोग को start करो. We are there to help you out, and there are many industry leaders who can help you. But as a student and as a student from IIT Bombay, you should take that lead क्योंकि तुम लोग के ऐसे opportunities हैं. You can get better Mm-hmm. connects in it. So you should start it. तो तब लगा ऐसा कि और एक मेजर पेन पॉइंट तब भी फील हुआ जब हम लोग ने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया. एवरीथिंग वाज वेल, लाइक स्पीकर्स Mm-hmm. इतने अच्छे थे, इंटरनेशनल स्पीकर्स वर देयर, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया का सब इतना बड़ा इवेंट हुआ था उस टाइम पे ऑर्गेनाइज आफ्टर कोविड. बट जब ऑडियंस थी तो ऑडियंस वाज नॉट ऑफ दैट काइंड जो उनको उतना अप्रिशिएट कर पाती उन चीजों को. लाइक सम Mm-hmm. ऑफ देम वर देयर जो समझ पा रहे थे उन चीजों को, बट मोस्टली ऑफ देम तो वर ब्लैंक. कई लोग उस टाइम पे सिर्फ एग्जैक्टली उस टाइम पे इतने अवेयरनेस नहीं था. पीपल डिडंट नो व्हाट दिस टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली मीant. एंड कई लोग तो मतलब होता है स्टूडेंट्स आए हैं टेक्सास को ओवरऑल घूमने आए थे तो दे वर जस्ट कमिंग कि फ्रीबीज बट रही है वहां पे या कुछ हो रहा है या Mm-hmm. एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं. बट नन ऑफ देम वर एबल टू अंडरस्टैंड द डीप कोर ऑफ इट एंड रियलाइज द पोटेंशियल्स ऑफ इट. तो वो काफी पेन पॉइंट फील हुआ Mm-hmm. कि ये लोग जो आए हैं वो एटलीस्ट इतने तो अवेयर हैं कि उन्हें दे आर एबल टू कम टू टेक्सास. उनके पास एटलीस्ट इतना पोटेंशियल भी है कि वो लोग वहां पे आ पा रहे हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट इट. तो ऐसा लगा कि अगर टायर वन सिटीज के मोस्टली लोग हैं वो भी नहीं Mm-hmm. जानते हैं, तो टायर टू टायर थ्री सिटीज में तो शायद और भी बहुत मतलब लैकनेस है गैप. उस चीज की. एग्जैक्टली. बहुत बड़ा Mm-hmm. गैप है. तो देन वी स्टार्टेड, तब हमने एज अ कम्युनिटी स्टार्ट किया था उसको, तब एज अ स्टार्टअप नहीं स्टार्ट किया था. देन वी Mm-hmm. फॉर्म द कम्युनिटी द ब्लॉकचेन हाइव. तो हमने उसको एज अ ओवरऑल कम्युनिटी स्टार्ट किया कि हम लोग ब्लॉकचेन की अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे. वील ऑल्सो ऑर्गेनाइज वेरियस फ्री इवेंट्स, फ्री वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे एंड अदर सिटीज एज वेल. तो हमने वो ओके. स्टार्ट किया उस टाइम पे लीड लेना, और उसी के थ्रू एक स्टूडेंट कम्युनिटी बिल्ड हुई. एंड एक जो अच्छा चीज रही वो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह कॉलेज में हमने जहाँ पे विजिट किया वहां पे कई बार ब्लॉकचेन के इवेंट्स हुए भी थे, बट Mm-hmm. मे बी कई बार ऐसा था कि अच्छे स्पीकर्स भी आए थे वहां पे, बट स्टूडेंट्स ना रिलेट नहीं कर पाते उतना. बट वी वर Mm-hmm. ऑल्सो एट दैट टाइम, so they are able to relate with us better क्योंकि हम भी उन्हीं की एज के हैं कहीं ना कहीं. Yeah. तो हम उनकी लैंग्वेज से रेजोनेट कर पा रहे थे और उन्हें Mm-hmm. उन्हीं की चीजों को. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो एक 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 व्हाट डू यू से, एक मतलब कोहेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि यू आर पीपल फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, राइट? हम्म. It's more like a discussion, it's more like sharing of ideas than a हाँ हाँ lecture हाँ. के जिसको सुनना है बस बैठ के. Where you they also can share their, उनका, if they have to share some ideas, they have to ask any questions, it becomes more natural in that way. So यस यस एग्जैक्टली. that's why it's a more of a community than a, seminar हम्म. or a lecture in some way. हाँ हाँ. And they feel part of it. And you continued doing this seminars, this community, events kind of, if you say this. हम्म. And this is how, naturally transitioned into a workshop, so what we call it now. यस. So what do you do in SwapSo currently? तो बेसिकली SwapSo का एज ओवरऑल विजन तो है कि डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट बनाना अराउंड एजुकेशन. लाइक हमारा मेजर फोकस रहेगा अराउंड लोन्स रहेगा क्योंकि एजुकेशन लोन्स में एक बहुत बड़ा मार्केट है. स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेजर इश्यूज इन गेटिंग एजुकेशन लोन्स एंड देयर इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट अपॉन इट. तो वी आर प्लानिंग कि उसको पूरे एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क पे लाया जाए ताकि स्टूडेंट्स बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे अप्लाई कर सकें. एंड जितना भी पेपरलेस, जितना ही अभी बहुत ज्यादा पेपर मैनुअल वर्क होता है इन्वॉल्व बैंक Mm-hmm. वगैरह के थ्रू भी, तो वो सारा एक सीमलेस नेटवर्क पे वर्क हो सके जहाँ पे पेपरलेस सारा हो पाए चीजें. तो वो एक हमारा मेजर विजन रहेगा. तो स्टार्ट विद इट हमने हमारी कम्युनिटी पहले बिल्ड करी जो द ब्लॉकचेन हाइप, जिसको वी रीब्रांडेड Mm-hmm. स्टार्टसो. हम लोगों ने इवन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी बनाया, अ डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग वेब3 की ही नॉलेज पूरी शेयर करी. हम लोगों ने काफी सारे कोर्सेज हैं एंड वी आर इवन प्लानिंग कि जो भी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज हमारी पार्टनर है उनके स्टूडेंट्स को कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड करें सो दैट वेब3 की अवेयरनेस और इजीली लोगों को मिल पाए एंड दे शो बेटर रिस्पॉन्स अपॉन इट. तो Mm-hmm. इसलिए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को भी फ्री करने वाले हैं पूरा, जो भी हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज है उनके स्टूडेंट्स के लिए एंड हमारी Mm-hmm. ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी. एंड Mm-hmm. अभी हम लोग ने टेकिंग इट एज अ इनिशिएटिव कि ब्लॉकचेन की अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. तो हम लोग यूनिवर्सिटीज के साथ भी टाई अप कर रहे हैं वेयर वी आर टीचिंग ब्लॉकचेन कोर्सेज एज अ electives एंड
एज अ डिप्लोमा कोर्स एज वेल। तो अभी रिसेंटली हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के साथ भी पार्टनरशिप किया, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। एंड वी आर ऑल्सो ओपनिंग स्टूडेंट क्लब्स अराउंड देयर, ताकि हम्म जैसे होता है ना, अभी आपने आईआईटी बॉम्बे का भी इवन मेंशन किया था कि काफी कम्युनिटी एक्टिव है। सो वी वांट हम्म टू रेप्लिकेट द सिमिलर मॉडल इन अदर कॉलेजेस एज वेल, जहाँ पे ब्लॉकचेन की भी कम्युनिटी बिल्ड हो पाए एंड स्टूडेंट अपने आप उसकी लीड लें। वी विल बी देयर टू सपोर्ट देम। हम उनको मेंटरशिप या और सारी चीजों में सपोर्ट करेंगे, गेटिंग स्पॉन्सरशिप एज वेल। बट वी वांट कि उसके लीड स्टूडेंट्स वहां के स्टूडेंट्स ले रहे हो एज ऑफलाइन, वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, खुद से प्रोजेक्ट्स करें। इवन वी गिव देम सम फंड्स इफ दे रिक्वायर इट, बट वो खुद से हम्म। उसकी लीड ले। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ इट, स्टूडेंट कम्युनिटी का। So सो so दिस इज, basically दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर डूइंग राइट नाउ। So basically, you are, educating people, educating students mostly around, Web3, by through community events, uh, and also help tying up with universities, and also kind of transitioning into some DeFi products where the same यस students यस are, when they are going for higher studies, they can यस also यस। utilize the community and uh, हम्म। facilitate their educational loans. But it's pretty interesting to look at it. If you look at it, we have seen at some DeFi platforms which provide you loans, loans for trading, trading bots and all those हाँ stuff. हाँ हाँ। How do you see this is pretty, I have not heard it before. Creating a decentralized platform for educational loans. So how do you see this entire, the economics of it, sitting together? How does it happen? तो बेसिकली शुरू से ही मेरा शुरू से थोड़ा इंक्लिनेशन था एजुकेशन सिस्टम के अराउंड की। एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे मेजर प्रॉब्लम्स है। मैंने खुद ने भी एजुकेशन लोन लिया, देन आई Hmm. रियलाइज द मेजर इश्यूज इन इट। कितना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। इवन जो Hmm. एसबीआई की स्कॉलर होता है स्कीम, उस जो Hmm. सिर्फ आईआईटीज एंड आईएम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, उसकी भी इंटरेस्ट Hmm. रेट 8.5 टू 8.75 है। इवन जो Hmm. नॉर्मल लोन्स होते हैं बच्चे जो लेते हैं वो 11 to 12% है, विच इज वेरी हाई। एंड Hmm. even those who are going for higher studies, they took a very huge amount of loan। हार्वर्ड के लोग Exactly. 70 to 80 lakhs तक का लोन लेते हैं। And being a Hmm. student, it creates a lot of burden, which also restrict them for further opportunities. So you want कि हम अगर इसको एज अ फ्यूचर विजन देखेंगे तो एक ऐसा ब्लॉकचेन हमारी होगी। सो आपको एक ब्लॉकचेन होगा जिस पे जो भी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टनर होंगे उनका डेटा पूरा ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा होगा, जिससे Hmm. लेटर फेज में इवन कंपनीज कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ब्लॉकचेन, जिससे Hmm. ओवरऑल एक ग्लोबल नेटवर्क बन रहा होगा। उनके प्लेसमेंट पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा उससे, बच्चों के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन उनको हायर स्टडीज प्लान है तो दे कैन ऑल्सो गेट दोज लोन्स एज वेल। तो एक Hmm. ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम होगा अराउंड एजुकेशन, which will add some value in the education system and also transition it a bit. Yeah, also, and if you look at it, these companies and even these trusts, whatever scholarships they offer, what the opportunities in that There way are many also. scholarships, but Hmm. most of the time स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। तो इफ दे विल बी ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जहाँ पे वो ज्वाइंड है, तो Hmm. एक होता है पूल बन जाएगा, स्कॉलरशिप पूल्स भी क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन इजीली गेट दो स्कॉलरशिप एंड दोज अपॉर्चुनिटीज। Exactly, exactly. So the there's a one-stop place with a one-stop solution where you understand the curriculums, the education as well, and as well as what are the opportunities beyond it when you look at it, for finding great colleges, great opportunities, as well as scholarship opportunities, various other competitive exams or opportunities there as well. यस यस। And this creates, there with the help of blockchain, you can create an immutable ranking system or some kind of score, यस यस। which these companies, when they are going to offer you jobs, or when they are going to take these interviews, these immutable records what you have uh, on blockchain, it kind of helps you to create your own career path. Degrees are going to become obsolete. Your social value, your the projects you have done, the open source projects that you have contributed to, so those things which are being stored on blockchain, these become your exact, what do you say, मेजर असेट्स। major assets, which is going to in turn
get you job or even social value in some way. That's हम्म। how the world is going to इवन look at. आजकल तो बहुत ट्रांजिशन आया भी है, जैसे Hmm. आजकल लोगों की प्लेसमेंट उतना उनकी डिग्रीज पे नहीं होती है, उनकी सीपीआई उतना मैटर नहीं करती है जितना उनकी स्किल सेट मैटर करता है। स्किल सेट तो एक मैटर स्लो करता है। ट्रांजिशन तो आ ही रहा है, आ ही रहा है। बट आई फील ब्लॉकचेन से एक मेजर ट्रांजिशन आएगा जहाँ पे इवन कई थोड़ा। बार स्टूडेंट्स को राइट कंपनीज की डेटा नहीं मिल पाता है, वो हम्म। अप्लाई नहीं कर पाते, तो इससे इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग जॉब्स एंड कंपनीज कैन हम्म। आल्सो गेट बेटर प्रोफाइल्स एज वेल, क्योंकि हम्म। ऑफलाइन में कितनी कैंपस में जा पाती है कंपनीज भी। Exactly. And if you have a place where all the eligible candidates are kind of hanging out, and all the people who are going to give them jobs are hanging out, so magic magic happens. So you said that it is happening. The transition is happening where your work is becoming more important than where you come from, but it's not properly एग्जैक्टली। streamlined. Matlab, there are not proper हम्म। matrices. It's not properly streamlined in a way. But these blockchain is kind of going to do that for everyone. Like, हम्म। so this is how future is going to look like, after 4 5 years. That's for sure. Education is going to change where you cannot go to any college. You can just sit at your home, हम्म। work on what you want, and that becomes that even that is as important as getting a degree from IIT. Someday this is going to happen, I believe. Only the major gap is कि अभी भी these can happen, like these all things can be built like we are building it, and Hmm. many others will also be taking some initiatives in that side as well. But major issue is that people are not ready for it. That's why Hmm. we have started initial like spreading awareness around it, ताकि Hmm. अगर मान लो किसी को क्रिप्टो पेमेंट ही नहीं करनी आती तो how will they take a Exactly. loan on DeFi? अगर Exactly. समवन डोंट नो व्हाट इज डीफाई तो हाउ विल दे टेक दैट नोट्स? तो एक Hmm. अवेयरनेस की काफी गैप है। आज भी मैं किसी सेशन वगैरह में जाती हूँ तो Hmm. इवन मैं स्टूडेंट्स को वॉलेट क्रिएट करना बताती हूँ, तो आई ऑलवेज एम्फसाइज कि दीज आर योर प्राइवेट कीज व्हिच यू कैन नॉट शेयर, बट दे टेक इट वेरी कैजुअली। बट वंस दे नो द impact that it is creating or the how important it is, then only they will be able to do the transaction in crypto payments and all. So Exactly. एक वो Hmm. अवेयरनेस में एक गैप है थोड़ा सा, जो शायद कुछ टाइम में फुलफिल हो भी जाएगा। इट इज ऑल्सो गेटिंग फुलफिल्ड नाउ एज वेल, बट शायद एक टाइम लगेगा, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग अडेप्टेड टू इट, बट उस मेजर क्राउड को रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आई फील शायद। Exactly. It probably takes a good one or two great products to come, which people get habituated to, and for that they will, adapt into Web3. And people predict that it's going to be gaming in a way, from some popular game which blows out on Web3 in some way, so that people get into mainstream Web3, and then these other use cases you kind of make it work in some way. But it's today the mainstream world getting in understanding what web3 is, they understanding these wallets, this key. So this is probably going, actually I was going to ask you this. You have met with so many students, you have interacted with so many community events. So even people who know about web3, even mm, who are in this world, what do you see this one or two major challenges in today in web3 in India? थोड़ा सा तो लाइक लोग को थोड़ा सा ना क्रिप्टो स्कैम से थोड़े से डरे हुए हैं, ऑनेस्टली Mm-hmm. बोलूं तो। उनको लगता है कि वेबसी स्कैम है, पता नहीं क्यों ये माइंडसेट है, बट थोड़ा सा कई बार मेरे को ये देखने को मिला, नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम। Hmm. एंड कई बार लोग पूछते हैं कि वेबसी में अपॉर्चुनिटीज हैं भी या नहीं, वो भी थोड़ा सा उनको होता है कि बिकॉज ना अभी कैसे एक ट्रेडिशनल सिस्टम सेट है बच्चों के लिए, लाइक Hmm. थिंक अबाउट देयर जॉब पर्सपेक्टिव, तो उनको ऐसा लगता है कि HTML करना है, फिर CSS कर लेना है, जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, वेब फिर डिजाइनिंग का कोर्स कर DSA कर लो। लेंगे, जॉब लग जाएगी। हाँ। हाँ, तो एक ट्रेडिशनल वे काफी सेट है उनके लिए तो फॉर गेटिंग जॉब्स, बट आई एम नॉट लुकिंग कि अगर वो वेब3 में करते हैं, लाइक एक डेवलपर रोल से बोलूं तो भी ब्लॉकचेन हम्म। डेवलपर की सैलरीज आर मच हायर देन अ नॉर्मल वेब डेवलपर, दैट इज एग्जैक्टली। फैक्ट। अगर एक एवरेज पैकेज ओवरऑल IIT का 12 लाख जाता है, तो वहीं एक ब्लॉकचेन डेवलपर का 18 लाख जाता है।
तो True. एक एवरेज पैकेज में भी काफी गैप है ही। एंड इवन कमिंग टू ब्लॉकचेन पार्ट, तो लोगों को ना ब्लॉकचेन में भी सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ही पता है कि सिर्फ एक Hmm. डेवलपर रोल एग्जिस्ट करता है, बट देयर आर Exactly. मेनी अदर रोल्स एज वेल विच दे हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट। तो वो भी एक थोड़ा सा Hmm. इशू हो जाता है, क्योंकि उनको वेब 2 में तो बहुत और भी चीजें दिखती हैं, बट वेब 3 में उनको सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपर का ही रोल दिखता है। तो Exactly. उसमें उनको ना For, अपॉर्चुनिटीज काफी रिस्ट्रिक्टेड फील होती yeah, हैं। for me also, I have figured out because I come from a finance background, right? And I found the world of Web3, the future of the world. So I came into it, and there are so much, there is so much things that a finance person can contribute to in a Web3 world, and which are in so एग्जैक्टली high एग्जैक्टली। demand. You look at tokenomics, you look at on the legal compliance part of Web3. So there are a lot of opportunity for a marketing person. There is a great people are looking for people who can get their projects on board, who can get the initial IPO right, the coin offerings right. So there are so many diverse set of opportunities, roles which nobody is looking at, you know, and with so much activity happening in Web3, and with AI, the Web3 has become even more, capable of, delivering its promise. So यस figuring यस। out this stuff and people who know this, spreading this awareness among everyone, that's what is the important thing that is missing in today's world. नहीं, वेब थ्री इज मोर ग्रोइंग एज द कम्युनिटीज आर ग्रोइंग, क्योंकि वेब थ्री कम्युनिटी ड्रिवन चीज ही है। मतलब हम्म। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ही एक कम्युनिटी बेस्ड है, कहीं ना Exactly. कहीं की पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो वो हम्म। स्प्रेड भी एज अ कम्युनिटी हो रहा है कहीं ना कहीं, एंड कम्युनिटीज आर रियली डूइंग वेल इन इट। देयर ऑर्गेनाइज, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स, एनीवन कैन अटेंड इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई विल से, क्योंकि हम्म। बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं वेब थ्री के। बहुत सारी कम्युनिटी ड्रिवन चीजें हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट के रोल्स हैं, इवन अगर जॉब पर्सपेक्टिव से बोले तो वेब एनालिस्ट के रोल्स हैं, रिसर्चर के रोल्स हैं। तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड इट। एंड वेब थ्री में ना जो मुझे बेस्ट पार्ट लगती है कि वो एज गैप नहीं है, जो हम्म। जनरल ट्रेडिशनल सिस्टम में है कि एक Yeah. मैनेजर आपका जो होगा वो बहुत बड़ी एज का बड़ा ही होगा, होगा। आप नहीं बहुत तो ही एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे होगे। नहीं नहीं, वेब थ्री में बहुत ही यंग एज वाले लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर लाइक रहे हैं। बहुत ही यंग एज फाउंडर्स हैं वेब थ्री में। काम तो दैट काम इज द मैटर करता बेस्ट है। थिंग। काम मैटर करता है। हाँ, यू शुड बी गुड एट योर थिंग व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली। वेबसी में जो यंग एज लोग हैं दे आर डूइंग वेल। एंड इससे ना जो जॉब का कल्चर है वेबसी का वो भी काफी इफेक्टिव एंड काफी एफिशिएंट है और हम्म। काफी कूल भी है, क्योंकि हम्म। जो आपके सीनियर्स भी हैं वो भी आपसे इतने बड़े नहीं है दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर इश्यूज एट योर हम्म। एज। तो दे विल बी हम्म। एबल टू अंडरस्टैंड कमिंग एट योर पॉइंट एज वेल। तो उससे एक अच्छा कल्चर भी बिल्ड होता है। एग्जैक्टली। ये कल्चर भी अच्छा बिल्ड होता है, वो कोलैबोरेशन, यू गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, एंड राइट पर्सन एट हम्म। द राइट जॉब, because the community is so the major fix is the community. Creating and nurturing a good community is one of the key hacks to build a great Web3 project, actually, I would say. And people who have that skill are very highly valued in today's world, to be honest. So you have built a very good community around SwapSo, so I congratulate you on that. You keep थैंक्स सो doing मच। great work. You keep doing great work. I'm very happy to see what you are doing, and will be thanks for sharing all your wisdom with us. So I think a lot of work that you have done. We look forward to माय doing प्लेजर। this doing this again probably.